नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आप सभी का वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, माँ नर्मदा का पावन उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से ही है। साथ में सोन और जोहिला नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। वीएम क्लासेस में आप सभी सहपाठीगण का स्वागत है। आइए हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। ये रहा हमारा ब्यूटीफुल सा कैनवास आपके स्क्रीन के ऊपर। जो हमारा टॉपिक चल रहा है, टर्बो मशीनरी। ओके, क्वेश्चन ऑफ द डे है द द स्पीड ऑफ रोटेशन इज 1800 आरपीएम ऑफ a 50% reaction turbine. The angles at the angles at inlet and discharge are discharge are 30 degree and 18 degree respectively. At a particular stage, at a particular stage, the mean ring diameter is the mean ring diameter is 0.75 meter and the steam condition steam condition is 1.2 bar, 0.95 dry. Estimate. First one, lead height to let pass 3.5 kg per second of steam. And second one, the power developed. स्टीम के लिए जो कंडीशन दी हुई है वो दी हुई है VF इज इक्वल टू 0.0010476 मीटर क्यूब पर किलोग्राम। VFG की वैल्यू जो दी हुई है 1.427 मीटर क्यूब पर किलोग्राम। चलो, ऑल राइट, सॉल्व इट डाउन करने का पूरा प्रयास रहेगा। चलिए, so here we have, first we have to take the r velocity triangle. So here much more most important thing is to be set on the picture.
पूरे नोटेशन दिए जाएंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। बी फेथ ऑन अस एंड बी पेशेंट। ओके, एक जो है इनलेट साइड का है, एक आउटलेट साइड का है, दोनों का कॉम्बो यहाँ पे देखने में आ रहा है, थीटा फाई अल्फा बीटा। Here the mean blade velocity is to be u. Okay, v w2 whirling velocity. Here inside one is v1, vr2. It's a v2, vr2. ये वाले फ्लो कंपोनेंट होते हैं, vf1 बोलो और इसको vf2। ऑलराइट, ये हमारा किस टाइप का है डायग्राम? 50% ऑफ रिएक्शन स्टीम टरबाइन। रिएक्शन स्टीम टरबाइन। चलो, here we have given theta is equal to beta is equal to 30 degree. Okay, alpha is equal to phi, which is 180 18 degree. Speed in rpm 1800 revolution per minute. Diameter 0.75 meter. All right, now at pressure 1.2 बार पे हमें v1 मिल जाएगा vf plus x time vfg with the dryness fraction. So here 0.0010476 plus 0.95 1.427. It is to be 1.357 meter cube per kilogram. Now tan over the theta is equal to Vf1 upon Vw1 minus u. It is to be V1 sine of alpha upon V1 cosine of alpha minus of u. Tan over 30 degree V1 sine 18 degree upon V1 cos 18 degree minus u, and u की वैल्यू pi dn by 60. So here pi into 0.75 1800 upon 60, value is to be 70.68 meter per second. Alright, further we move ahead. We move ahead, then 0.577 is equal to 0.31 v1 over 0.95 v1 minus u. So the v1 value is to be 2.42417.0.8 meter per second. Now flow velocity of 1 is equal to v1 sine of alpha. It is to be 170.8 sine 18. It is to be 52.78 meter per second. Now required height of bleeding. Mass flow rate is equal to 3.5 kilogram per second, and it is to be mv1 pi times d hb vf1. Now 3.5 into 1.357 pi times of 0.75 hb
52.78. So, so here HB value is to be 0.038 meter, 38.19 mm. Okay, now the power developed is equal to mass flow rate VW1 plus VW2 into U. So the mass flow rate 2 times of V1 cosine of alpha minus U into capital U. It is to be 3.5 2 into 170.81 minus multiplied cosine of 18 minus 70.68 into 70.68. Here the final value is to be 62.89 kilowatt. Alright, easy peasy. Next, moving ahead for the next question. The velocity of steam entering at a simple impulse turbine. For the next question, the velocity of steam entering a simple impulse turbine is impulse turbine is 1000 meter per second, and the nozzle angle is and the nozzle angle is 20 degree. The mean peripheral velocity of the mean peripheral velocity of blade is 400 meter per second. Is 400 meter per second. The blades are asymmetrical. The blades are asymmetrical. If the steam is 2, if the steam is to enter the the blades without shock, that will be the blade angles. That will be the blade angles. Neglecting the friction effect of the blades, neglecting the friction effect on the blades, calculate the tangential force on the blades, force on the blades, and the diagram power for a mass flow of
0.75 kilogram per second. Calculate the axial thrust and diagram efficiency. Okay, so we move ahead. Definitely. चलिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अल्फा 1 is equal to अल्फा 2, it is to be 20 डिग्री। और क्या गिवन डाटा है हमारे पास? V1 कितना है? 1000 मीटर पर सेकेंड। बीटा 1 is equal to बीटा 2, असिमेट्रिक प्लेट है। मास फ्लो रेट कितना है? 0.75 किलोग्राम पर सेकेंड। AB is equal to 0. So therefore VR1 sin beta 1 is equal to V1 sin alpha. So here beta 1 is equal to comes tan inverse over the V1 sin of alpha upon V1 cos of alpha minus VB। यहाँ पे हमारा VR2 है V1 cos of alpha minus प्लेट वेलोसिटी VB। ओके, सो अगर मैं इसका डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना चाहूँ तो मुझे कुछ सीन तरह से दिखेगा। ओके, अल्फा 1 अल्फा 2, इट्स अ बीटा 1 एंड बीटा 2। V1 VR1 VR2 and V2। There is a gap between these 2 points is to be called VA, and here to here distance over the whirling component। ओके, कौन सा डायग्राम है? वेलोसिटी डायग्राम है हमारा। ओके, तो यहाँ से हम बीटा 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। बीटा 1 is equal to all the value we have to known, we should put it on। so 1000 sin 20 degree upon 1000 cos 20 degree minus 400, so the value is comes 32.35 degree, also equals to beta 1 and beta 2। so the VR1 sin beta 1 is equal to V1 sin alpha। VR1 value is to be 342 upon sin 32.35, so value is to be 639.25 meter per second। Now
VR1 is equal to VR2, and change of Berling component is to be from the trigonometry VR1 cos of beta 1 plus VR2 cos of beta 2. So it is to be 1080.07 meter per second. All the values we have to know. Beta 1 is equal to beta 2 to R1 VR1 cos of beta 1 2 into 639.25 multiplied with cos of 32.35. After that, change of axial component is equal to VR1 sine of beta 1 plus VR2 sine of beta 2, which is to be 0. Now the tangential thrust, it is to be mass flow rate into change of Whirling 0.75 into 1080.07, which is 810.05 Newton. Now the work done, tangential thrust into blade velocity. So 810.05 into 400. The value is to be 34.02 kilowatt. Now diagram efficiency, which is 324.02 upon half of rho AV square. So here we have 0.75 1000 square into 10 raised to power minus 3, 864 or 86.4%. और एक्सियल थ्रस्ट क्या हो जाएगा, ms into delta pa. It is tending towards the 0. Alright, ठीक है, आपका सेशन इतना ही रखते हैं, यहीं पे हम एंड करेंगे। साथियों, वीएम क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करिए। जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के शिखर पर सदैव अग्रसर रहिए, यही ईश्वर से हमारी कामना है। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।